मानुषी संवाद में आपका स्वागत है. वेलकम टू द 10th July 2022 edition of Manushi Samvad. Friends, today we have with us Nikunj from North America. He belongs to this organization, ये है Coalition of Hindus of North America, CoHNA for short. निकुंज त्रिवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है और आपसे सुनना चाहते हैं कि वहाँ अमेरिका में आप ये कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो भयंकर बदलाव आ गया है. वैसे कंसिस्टेंट रहा है. मैं जानती हूँ कि 80s में भी कितना ज़्यादा एंटी हिंदू माहौल था यूनिवर्सिटीज़ में. तब ओवरऑल समाज में इतना एंटी इंडिया एंटी हिंदू नहीं था, पर जो यूनिवर्सिटीज़ में तो तब भी वहाँ पे शुरू से ही रहा है ये, स्पेशली साउथ एशियन स्टडीज़ में. तो अब तो लगता है कि पूरी की पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस्लाम के आगे घुटने टेक चुकी है, जैसे हमारी सरकारें घुटने टेकते आई हैं. सो टेल मी अबाउट योर बैटल देयर. हाँ, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. यू सी, इसमें होता क्या है कि जो हिंदू फोबिया है, इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत ऊंचा, पुरानी है. a bit louder now, Nikunj. कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, better. हाँ, But so be loud. हाँ, ठीक है. सो हिंदू फोबिया की जो हिस्ट्री है वो 80s में सिर्फ नहीं है, पर मे बी 100 या 150 साल पुरानी है. When the first Hindu immigrants came to America, they were considered, inferior, and Hindu dharma ko the way they were portraying it, it was very negative. So पहले से ही वो trend है. पर उसमें हुआ क्या है कि अभी the challenge now is not पहले था, it was more like, okay, Hindus are bad people, okay, this weird religion, वो सब चीजें. That is, continues. आज भी है वो, और वो चलता ही रहेगा, क्योंकि there are vested interest on that. ठीक है ना? पर अभी हो क्या रहा है कि there is a different trend now. And the reason we have started to use the word Hinduphobia, people say, well, no one really fears Hindus. It's not about fearing Hindus. It's about creating the idea that Hindus are bad people and creating the idea that we should fear Hindus. So Hinduphobia is a very important idea. Hinduphobia starts with hatred of Hindus, right? There's an intense hatred of Hindus through either misunderstanding or through intentional, creation of that. फिर उसमें से hatred से fear आती है. It's not, no one is fearing us in America. The only fear that people may have is, oh, some Hindu is going to take my job. ऐसी करके कोई fear होती है. But what they're trying to show is this Hindu people are actually very bad because they are suppressing minorities, they're murdering minorities, they are raping people, this rape culture idea. And then, by the way, that comes उनके ये क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स में ही ये सब है. जैसे कि इट्स नॉट कि लाइक सोसाइटी में ऐसा है, इनफैक्ट इनकी रिलीजन में ऐसा है. दैट्स हाउ दे वांट टू पोर्ट्रे. सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई प्रोफेसर है यहाँ पर, जैसे कि प्रोफेसर वेंडी डॉनिगर है या प्रोफेसर ऑड्री ट्रस्की है, वो लोग क्या करते हैं कि इस महाभारत में द्रौपदी का जो चीरहरण के जो सीन है ना, उसको पकड़ के ऐसे कहते हैं कि भाई ये द्रौपदी का चीरहरण है 5,000 ईयर्स से यही चल रहा है इंडिया में, और ये आजकल के मेंटालिटी जो है, इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ महाभारत, ओके, और सम ऋग्वेदिक स्क्रिप्चर या कोई भी जो भी है. सो दे ट्राई टू ट्रेस द बैड हिंदूज ऑल द वे टू द रिलीजन एंड द स्क्रिप्चर्स. सो ऐसे करके दैट्स हाउ द phenomenon is being stressed. So it's being given academic and institutional backing. It's not just about the fact कि भाई कोई आम आदमी कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है, पर it's actually coming from academic institutions and it's coming from क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में तो ठीक है, पर इवन as far as 6th grade, यहाँ पे 6th grade से चालू होता है ये सब. When they teach you, first thing they teach you in Hinduism is caste system. ठीक है, सो वहां से ये चालू करते हैं. फिर caste system में वो लोग सिखाते हैं कि भाई there are 4 castes and always the Brahmin is the guy who's always suppressing Dalits, and then they actually do role play. यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि पूरी स्कूल में, एक LA में एक स्कूल है लॉस एंजलिस में, उन्होंने क्या किया कि पूरी क्लास को 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने कहा कि ओके, एक गेम खेलेंगे जिसमें ब्राह्मण के पास सबसे कम चीजें होंगी पहले, और जो लोअर कास्ट उनके पास ज्यादा चीजें होंगी. पर फॉर्मूला ऐसा बनाया
कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या हुआ कि ब्राह्मण्स के पास सब कुछ ज्यादा हो गया. सो ऐसे करके बच्चों को ये भी सिखाते हैं, एंड नॉट एवरी स्कूल, पर दिस हैपेंस. बट द caste system idea, this idea that Hinduism has a lot of backward things, oh, it's a foreign religion coming from the Aryans, ये जो idea है, that has been going on for a long time. So it starts from all the way in the beginning. जब 6th grade से चालू होता है, so लोग को सिर्फ यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि हिंदुइज्म इज हैज caste, हिंदुइज्म इज बैकवर्ड रिलीजन. दैट्स द रियल आइडिया. बट द लिव्ड एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो एक्चुअल रियलिटी जो होती है, वो किसी को लाइक ग्रास्प नहीं होती. और फिर मीडिया कम्स इन फाइनली. मीडिया कम्स इन एंड देन दे ऑलवेज शोकेस हिंदुइज्म थ्रू टेम्पल ऑफ डूम. यहाँ पे इंडियाना जोन्स का एक देयर वाज अ मूवी कॉल्ड इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम. सो जब भी ये यहाँ पर स्वामीनारायण का जो इश्यू हुआ था, बैप्स का, BAPS का, दे वर अक्यूज्ड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड थिंग्स लाइक दैट इन द टेम्पल. यहाँ का पेपर है डेली ट्रेंटोनियन करके, न्यू जर्सी में ही. उसकी हेडलाइन क्या थी? दिस इज द टेम्पल ऑफ डूम. ठीक है. सो अमेरिका में अगर आप इफ यू आर ग्रोइंग अप इन द 80s एंड 90s, और अगर आपने देखा होगा ये मूवी टेम्पल ऑफ डूम, उसमें अमरीश पुरी को दिखाते हैं, एक ही इज लाइक दिस क्रेजी काली वर्शिपर who is eating brains and taking out hearts of people and things like that. So abhi bhi ye jo gory graphic imagery jo hoti hai, that is how many times Hinduism is depicted. And finally in the popular culture. So abhi main wo Kali poster ka we will talk about that recent Kali poster controversy that started in Canada. Par uske pehle bhi what they try to show is Hinduism can be used in any way. So you can use Hindu deities on chappal, you can use Hindu deities on underwear, you can use Hindu deities in a fire station, fireplace, decorative items है. So हमारी जो पूरा धर्म है is an exotic erotic religion. So ऐसे करके वो लोग दिखाते हैं. So that's how Hinduphobia is, I would say, prevalent or perpetuated in as we go into the society. Or then they also connect this whole idea that today's Indian regime, again, I don't want to discuss politics here, but the point is that today's Indian regime is actually connected to that ancient religion, and as a matter of fact, is hell-bent on destroying every religion. So this idea is continuously then planted on people in North America. कि somehow people who are born and raised here, जैसे कि मेरी बेटी है या फिर कोई भी है, they are somehow responsible for the actions of BJP, whatever you want to call this, or actions of some Hindu in some small village in India. Somehow people sitting in America are responsible for this. But if you look at Chinese, if you look at Koreans, if you look at Japanese, if you look at any other European, Russians, Ukrainians, jo bhi hai, they are never held responsible for actions by governments in those countries. But somehow Hindus are responsible for every action taken by BJP or every action taken by some group in India. And that is how Hinduphobia is created. ये बताइए कि क्या हिंदूज आर सिंगल्ड आउट कि और भी ग्रुप्स हैं इस किस्म से जिनकी नेगेटिव प्रोफाइलिंग, नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग होती है? आर वी द ओनली प्रिविलेज्ड वंस? सो सभी की होती है. आई मीन जो माइनॉरिटीज है अमेरिका में उनकी होती है, कनाडा में भी ऐसे होता है. पर वन ऑफ द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उनकी जो कम्युनिटी है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स है या फिर जूस है या फिर सिख्स है, उनकी कम्युनिटीज के पास ऐसी सपोर्ट है, रिसोर्सेज है और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है. उनकी जो कम्युनिटी है उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं जिसमें से वो लोग काउंटर कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे में क्या होता है कि बिकॉज हमारे डिविजन ज़्यादा हैं या फिर कोई जस्ट स्ट्रेटजी इज लैकिंग, तो उसमें होता क्या है कि वी आर नॉट एबल टू काउंटर. सो सबको होता है. द प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग फॉर एवरीबॉडी, पर सॉल्यूशंस उनके पास है. They have created institutions, they have created academic backing, जो भी है on universities. Unfortunately for the Hindus, that doesn't exist. We make a lot of money. Google के CEOs है, Twitter के CEOs है, ये है वो है, सब हिंदू हैं. But none of them come out with courage to talk about Hindus, number one. Number two is, if हाँ, just to finish. Continue. No, please continue. हाँ, so just to even if they don't come out, let's say कि सुंदर पिचाई को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, no problem. But you know what? You can donate money. You can support other people. There are many ways you can extend your network into this. So अलग जैसे कि Jewish community है, they face a lot of hatred, ठीक है? But they have a lot of good resources that they can actually put together and put to use. So that's why there's counter information that exists to protect their communities.
ऐसा नहीं है कि उनको अटैक्स नहीं होते हैं। नहीं, जूस की तो प्रेजुडिस अभी भी है बाकायदा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस वो भूलते नहीं हैं। इफ यू आर इवन अ हाफ बिलीविंग क्रिश्चियन, तो वो जो एक नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जेनोसाइड हो गई जूस की, आई डोंट थिंक अमेरिकन्स हैव रियली गॉटन ओवर इट, ओवर दैट प्रेजुडिस. But you're right that Jews have organized themselves as a powerful lobby and they don't take any nonsense lying low. अब जो इस्लाम की कहानी है, या even what would you say about Latinos or Mexicans, उनके प्रति क्या रवैया रहता है? Is it because they are Christians तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? नहीं उतना उनको, हाँ, नेगेटिव नहीं होगा. एग्जैक्टली नहीं, उनके लिए प्रॉब्लम है इमिग्रेशन, और ये लाइक यू नो दिस आइडिया कि भाई दीज आर इन्फीरियर पीपल, दे ओनली डिजर्व टू बी यू नो थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री. सो ऐसा उनके लिए रिलीजियस बायस यूजुअली नहीं होता उनके लिए. हाँ, इन अमेरिका में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स और उनके बीच में भी इश्यूज हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स you know may feel superior to Catholics. This has been a problem. So there the Mexicans and stuff are Catholics generally speaking. So ये थोड़ा थोड़ा होता है, पर generally it's a more of a immigrant bias issue उनके लिए. So हमारे लिए we face multiple religious bias भी है, immigration bias भी है, and it's a combination of the two. और रेशियल बायस भी तो है. हाँ, racial bias also, We are exactly. brown or Exactly. closer to black than to whites. हाँ, Mexicans can be closer to whites, at least in depends. skin color. हाँ, पर हम तो बिल्कुल रंग अलग ही है, बालों का रंग भी अलग है, आंखों के रंग भी अलग हैं, तो रेशियल बायस तो स्ट्रांग है ही. हाँ, पर अभी इसमें उसकी क्या हो रहा तो है मधु जी, actually interesting phenomenon is going on in America. एक साइड वी आर फेसिंग रेशियल बायस, ठीक है ना, विच इज अ रियलिटी. दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जो देयर इज ए काइंड ऑफ ए almost a movement, the social justice movement, part of the social justice movement tries to portray us as what they call white adjacent. ठीक है, ये शब्द जो है white adjacent, which shows that we are, because of the wealth and because of the privilege that we have, we should be considered closer to the white people than closer to any other minorities. ठीक है ना? So as a result of which they want to essentially label us as like, oh no, 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 Hindus don't really face any issues. They are rich and privileged people that have a lot of money, they have a lot of resources. ऐसे करके they're trying to whitewash the oppression or the biases that we face. एक तो ये बहुत स्पष्ट है कि वेस्टर्न या वाइट रेसेस जो क्रिश्चियनिटी में, ओवरऑल क्रिश्चियनिटी के आगोश में आ चुके हैं, कुछ भी कर लें, इनकी सेक्युलरिज्म भी हमारे खिलाफ ही जाती है, हमारे धर्म के खिलाफ. इनकी सेक्युलरिज्म भी हमारे प्रति उदार नहीं हो पाती, और उसको नष्ट व नाबूद करने की एक जो इस्लाम की मंशा रहती है, वो ही बिल्कुल क्रिश्चियनिटी की. एंड वुड यू ऑल्सो नॉट consider the role of missionaries in funding churches, I mean in funding universities, क्योंकि अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज, एज यू वेल नो, एज इन यूरोप, तो उनके लिंक्स चर्चेस के साथ बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो बहुत सा पैसा भी इन दोनों में आदान प्रदान होता रहता है यूनिवर्सिटीज़ में. और ख़ासकर ये जो एकेडेमिया है, इसमें चाहे वो एनजीओज हों, उसमें भी सेक्युलर बना के एनजीओज को पैसा देती हैं. अमेरिका की चर्चेस बहुत एक्टिव हैं एंड दे ब्रिंग द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी टू कंट्रीज लाइक इंडिया. बट यूनिवर्सिटीज़ में भी इनका बहुत बोलबाला है, बिकॉज हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से जितने भी हिंदू बैशर्स हैं वहाँ जाते हैं, तो कांचा इलैया हो या ये टीस्टा सेटलवाड, ये जो जिनके बहुत यूनिवर्सिटी लेक्चर्स होते रहते हैं और बहुत पैसे मिलते हैं इनको, बहुत, आई मीन दे लोड दम विद मनी, दे लोड दम विद अवार्ड्स, दे लोड दम. Actually, if you examine, it's not so much universities that are inviting, but it's the churches that are organizing
their lecture tours through their diverse hydra-headed organizations. Do I have it right? हाँ, उसमें अगर आपने राजीव मल्होत्रा जी की ब्रेकिंग इंडिया में दिखा होगा, ही गिव्स अ ग्रेट मैप ऑफ दिस, यू नो, जो कनेक्शंस जो है इंडिया अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और मिशनरीज से जो कनेक्शन है, और जो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिलती है यहाँ पर और भारत में, दो जगह पे दे हैव द कनेक्शन। सो उसमें वो डेफिनेटली आपकी बात 100% है। दूसरा क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स में फंडिंग जो आती है कभी-कभी, वो इन लोगों से आती है। और फिर वो डिपार्टमेंट्स, स्पेशली जो साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट है ना, they are not necessarily funded by Christians, but there's a big influence of some of these missionaries. And उसमें फिर then they start to teach, one big thing is caste. हमेशा caste is taught in such a way to make sure that Hinduism can never be looked at in a positive way. एक जैसे कि एक धब्बा लगा दिया ना उन्होंने कि भाई दिस इज व्हाई हिंदुइज्म कैन नेवर बी प्योर बिकॉज यू हैव कास्ट, ऐसे करके दे कीप डूइंग दैट। बाकी तो एंड देन व्हाट दे विल डू इज के कोई बिजार प्रैक्टिस, जैसे कि कोई माइनॉरिटी प्रैक्टिस जो हिंदूज में होगी, कहीं गांव में कहीं जाके वो लोग एक रिसर्च करेंगे कि यहाँ पर किसी औरत को ऐसा किया था, किसी ये प्रीस्ट ने इसको, इस औरत को ऐसा किया था, और दिस इज हिंदुइज्म। ऐसे करके वो पेपर बनाएंगे और पेपर बना के यहाँ पर आएंगे और प्रेजेंटेशन देंगे। सो दैट्स वन साइड ऑफ थिंग। सो ये कंटिन्यूसली रहता है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, ठीक है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इफ यू लुक एट द एजेंडा ऑफ द होल कॉन्फ्रेंस, यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। एंड दिस वाज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बिकॉज इट वाज अ पैंडेमिक गोइंग ऑन, बट द एंटायर यू आर म्यूट। Louder, please. So the entire conference had a very anti-Hindu agenda, and it's an academic conference. Okay, academic conference में anti-Hindu agenda was actually institutionalized, and मेरे पास उसकी information भी है that I can share. But the point is, just UC Davis for 2019 में University of Michigan में caste symposium हुआ था. वहाँ पर कांचा इलाया came and he basically said Hinduism must be destroyed. Okay, these are his words. Now imagine this कि किसी भी कोई भी और, जैसे कि इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म, कोई भी रिलीजन लो, और someone makes a statement कि भाई this religion must be destroyed, what do you think will happen to that person? उसका क्या हाल होगा? Will he ever be called back to the university? But this happens to Hindus. बट देखिए, ये हमारे सरकार का भी दोष है। अगर कांचा इलाइया, ये कल से परसों से नहीं, ये 80s से इसने शुरू कर दिया था कहना, और जो कन्वर्जन, इसकी फॉर्मल कन्वर्जन जो हुई है, ये हुई है जो कास्ट वाली रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन के दौरान he started gravitating towards Christianity, and I've personally tracked his journey. Now, the point that I'm trying to make is this: अगर वहां जाके जो इसने बकवास की थी, झूठ, बकवास, फरेब, एंड क्रिश्चियनिटी का एक सिपाही बन के, फुट सोल्जर बन के, यहाँ आके एयरपोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल में ले जाया जाता उसको, और नौकरी से उसको हटा दिया जाता। उसके ऊपर ये जो नफरत फैलाने के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कानून हैं, उस पे लग जाते, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को भी अकल आ जाती और बाकी लोग भी जबान संभाल के बात करते। हमारी सरकार क्योंकि एक्शन नहीं लेती है, वो प्रोफेसर बना पड़ा है, वो आदमी जो एक चपरासी बनने के लायक नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में, वो प्रोफेसर बना घूमता है, सारे दुनिया में उसको घुमाते। और हमारी भारत सरकार क्या, हमारी प्राइम टाइम टीवी चैनल्स उसको इतना टाइम देती थी। एक दो बार मैंने कुछ टीवी चैनल्स को कहा भी कि आपको मालूम भी है ये कितनी जहर उगलता है, डू यू हियर हिम, और यू नीड समवन टू डू दैट एट समबडीज बिहेस्ट। कौन है जो आपको ये पीछे से चाबी चलाता है कि इसको लाओ, क्योंकि ना तो वो बहुत अकल की बात कर सकता है, ना वो कोई ज्यादा उसकी स्कॉलरशिप है, नफरत उगलने वाली है, एंड somebody writes the script for him, you know, the churches that he belongs to. The point is, हमारा मीडिया उसको, ऐसे लोगों को बाइकआउट नहीं करता। हमारी हुकूमत इतनी
इफ आई हैड द पावर, ऑनेस्टली मैं इनके सबके पासपोर्ट इम्पाउंड करके तिहाड़ जेल में बिठा दूं. दीज आर सीरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट अ होल सिविलाइजेशन. ये केवल आपको या मुझको डिफेम करने का नहीं है. आस्किंग फॉर डेसिमेशन, आस्किंग फॉर जेनोसाइड of a whole community, whole religion, whole faith tradition, the oldest civilization, surviving civilization in the world. It's a serious crime. वो हमारी दब्बू सरकारें हैं ना. लोग सोचते थे मोदी जी आएंगे तो बदल जाएगा, भाजपा आएगी तो बदल जाएगा, इन्होंने और छूट दे दी है. तो सवाल ये है कि जब हमारी सरकार एक्शन नहीं लेती, जिस दिन भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि वहां की सरकारों से लड़ने से ज्यादा एनआरआईज को भारत सरकार पे डंडा चलाना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो. बिकॉज द lack of action of the Indian government towards such hate mongers actually endangers you, endangers all Hindus anywhere in the world. या नहीं, आपकी बात सही है. सी, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी है ठीक है, परफेक्ट. बट द प्रॉब्लम इज, नहीं सुनाई, आवाज नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा ऊंचा. हाँ, the problem with freedom of religion is it has to go both ways, and freedom of expression. Abhi, if Kancha Ilaya ji bolenge aise, then we have the right to say something also without being called fascists and this and that. That's number one. Number two is there is power in capitalism. जैसे कि यहाँ से भारत सरकार कह सकती है कि जो यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू peddle hatred against any religion, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म है, those universities do not have the right to operate in America, in India. या फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि कितने सारे स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ आते हैं. I asked someone in the Indian government one of the times when there was a meeting going on. I said, do you have a database of all the Indian students that come from India? And the answer was no. If यहाँ की भारत सरकार के पास अगर ये डेटाबेस होती, तो then they would send a SOS basically saying, bhai, look, this is what goes on in campuses. So when you show up, please be ready to understand that you are going to be considered casteist and your religion will be targeted. And you being an international student and you being a minority, you will have multiple issues. So that is something that is very important that has to be done from Bharat itself. But unfortunately, we can't do anything from here. We will try to do what we can from our end, because we are American citizens and we have to make sure that we protect our people here. But भारत से इतने सारे बच्चे आते हैं, उनको कौन प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर? No one. It comes on to us then. देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत देख चुकी हूँ और बहुत भुगत चुकी हूँ, और इतनी नफरत होती है जिस तरह की ओरिएंटेशन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देती हैं हिंदू स्टूडेंट्स को, खासकर. किसी और को इस तरह नफरत का टारगेट नहीं बनाया जाता. If I had the power, I'll never have it, but I'm telling you, if I had the power, or if somebody would listen to me, I would say, just declare that no Indian student will go to any of these universities at all. हम नहीं भेजेंगे, हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, और जो वहाँ चले जाता है उस डिग्री को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे. जहाँ हिंदू फोबिक इंडिया बैशिंग होती है, इन यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया हमने, और इन यूनिवर्सिटीज से जो डिग्री लेके आएगा अपने बलबूते पे, उसको यहाँ हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं मिलेगी. आई टेल यू, ऐसे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री है. दिस इज नॉट एन इनोसेंट. और आपने कहा ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. वो हमको क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उनको भी क्रिटिसाइज कर ले. आई एम सॉरी, let's not go for equivalence. Firstly, they do it through genocidal acts, cultural genocide, physical genocide. अमेरिका ने कितने मुल्कों में जेनोसाइडल वायलेंस की है, चाहे सीरिया ले लो, चाहे इराक ले लो, चाहे वियतनाम ले लो, अभी अफगानिस्तान ले लो. दे जेनोसाइडल, देयर पॉलिसीज आर जेनोसाइडल. और हिंदुस्तान में भी कल्चरल जेनोसाइड में तो ये लगे हुए हैं, और कन्वर्जन जिस तरह ये फैला रहे हैं अमेरिकन चर्चेस. सो
they do it through means so foul that you and I, as Hindus, we they, those dusht vichars, that whole mindset is beyond our reach. We are incapable of it. आज भी आप कह रहे हो, अच्छा या तो फिर टू वे स्ट्रीट हो, टू वे स्ट्रीट हो नहीं सकती। एक बकरी और भेड़िए में टू बराबरी हो नहीं सकती। बकरी को अपनी जगह सुरक्षित अलग ही रखनी पड़ेगी, आप उनको एक ही चरागाह में रख नहीं सकते। तो ये भेड़ियों के साथ ये कहना कि अगर तुम हमें मारते हो भेड़िए, हम भी तुम्हें मारेंगे, पर बकरी क्या मारेगी भेड़िए को? वो तो खाई जाएगी। Let's not even get into this freedom of and it's not freedom of expression. What is at play, Nikunji? What is at play is genocidal, psychological violence, cultural violence, and actually also physical decimation of whole cultures where Christianity has gotten a foothold. तो ये इतनी माइल्ड डिमांड से नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ नहीं, आई एग्री। अभी वो जो आपने बकरी और भेड़िए का एग्जाम्पल दिया है, 100%। हम लोग को बकरी से भेड़िए बनना पड़ेगा। वी हैव टू कम अप द कर्व। सी दैट्स द ओनली थिंग। ये इट्स अ सिविलाइजेशनल बैटल। आपने कहा ना, इट्स इंडियन गवर्नमेंट कैन डू समथिंग, पर अमेरिका में क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट हैज नो पावर इन अमेरिका, राइट? दे कैन हैव सम डिप्लोमेसी, ऑल दोस थिंग्स गोइंग ऑन। नहीं नहीं, अगर भेजना बंद कर दे, कहें ब्लैकलिस्ट कर दिया, नो, दैट्स अरे दैट्स अ बड़ा डिफरेंट थिंग। सिंपल है, उसमें क्या कर सकते हैं? आपकी यूनिवर्सिटीज का सोशल साइंस में जो भी बच्चा है, उसको हम यहाँ किसी किस्म की नौकरी हम नहीं लेने देंगे। वी ब्लैक लिस्टिंग, फुल स्टॉप। नो, क्या दैट्स कर लेंगे? ऑब्वियसली क्या कुछ कर नहीं। लेंगे? एग्जैक्टली, दैट्स द इंडियन डिसीजन। So what I'm saying is that the American government is not going to listen to you. Why doesn't CoHNA put pressure on the Indian government to revise its ways of handling American universities? Clamp down on them. कितना पैसा जा रहा है इस देश से, और हमारे घरों के सारों के बच्चे वहां से हिंदू बैशिंग, सेल्फ हेटिंग इंडियंस बन के निकलते हैं। क्या एडवांटेज है हमारे लिए? फिर वो सारी यूनिवर्सिटीज में फैल के और जहर फैलाते हैं। क्या एडवांटेज है हमारे देश के लिए? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेशनल एसेट्स, जो मोदी जी जब कहते हैं ना, यूथ डिविडेंड, यूथ डिविडेंड, मेरे 130 करोड़, मेरा खून खौलता है मोदी जी कि ये बातें सुन के। एक तो लुम्पनाइज्ड यूथ, जो सरकारी स्कूल सिस्टम या unemployable lumpenized youth. The other kind which gets elite education is self-hating, Hindu bashing, India bashing youth. क्या कर लेंगे इनके? एक छोटा तबका निकलता है आप जैसे लोगों का, जो वहां रह के भी अपनी सेल्फ एस्टीम किसी तरह से बचाए हुए हैं। So I think we just have to take strong measures. And Nikunj, I want to know, how your experience of being in America. Why did you choose to go there? And what has been your experience that brought you to CoHNA? Whereas most Hindus tend to stay away from these civilizational issues. They are content that they are making progress, their kids are getting good jobs, the world can go to hell. बताइए आप अपना life story थोड़ा। No, of course. So I came to the US 29 years ago, almost. मेरे पापा यहाँ पर, he immigrated here in the 80s. And Louder. so my parents immigrated. My dad immigrated here in the 80s. And from there, he called us here. So then when I came to America, what I realized is that there was a lot of, I faced racial hatred and unfortunate Hinduphobia when I was growing up. So जैसे कि मैं 10वीं साल में था, like 10वीं कक्षा में था, तो वहाँ पर basically people were saying कि, oh, you are a cow worshipper, you are a do you eat monkey brains, ऐसे करके they were like always teasing, ठीक है? So then I realized कि there is a lot of negativity here, there's a lot of misconceptions, and if we don't do something, if I don't do something for myself, in the future generations, things will not be good. So I decided to join an organization called Hindu Students Council. It's in different universities. Hindu Students Council, alag-alag universities mein, it's an organization. So I decided to join that. So once I joined Hindu Students Council, I got in touch with people like Rajiv Malhotra ji and others who
Then we're looking at the civilizational aspects, the different aspects, the different challenges that we were facing and things like that. So wahan se I got more and more inspired, and I continued this journey. And then a few years ago, or a little over 2 years ago, we started CoHNA as a grassroots advocacy and civil rights organization, because we needed to make sure that people read and learn about what the challenges are. Because most people are busy with Bollywood, cricket, घर पे जाओ, थोड़ा family के साथ time spend करो, watch a TV serial and go to sleep. Until their kids get attacked, until they get attacked at workplace or something happens, and then all of a sudden they want to wake up. But it's too late sometimes. So we need to get more people organized. And then आपको पता होगा 2019 में, because of Kashmir, Article 370, CAA, all these things going on, there was a big anti-Hindu atmosphere that was being prevalent in America. Lot of issues. Okay, continuous like bashing of India, continuous bashing of कोई Hindus. उदाहरण दीजिए proper. For Give me example, examples of हाँ, what happened. ठीक है. So और आपके वर्क प्लेस में आपका प्रोफेशन क्या है? मैं फाइनेंस में हूँ, बैंकिंग में हूँ. तो वहां कुछ आपको लगता है ऐसा? हाँ, so I'll give you a small example. I'll give you three examples. Number one is कि I was in a meeting, ठीक है, and this guy basically, I was talking to that person, this guy, and basically he was basically saying that, all this, like my wife is into all this yoga mumbo jumbo stuff, and it's all kind of weird, like like cultish behavior and things like that. That's how like the idea of being a Hindu is being portrayed right in front of my eyes. So I told the guy, I was like, do you know what you're talking about? Have you ever been to a yoga center? That's my culture that you're referring to. So he's like, oh, I'm sorry, I did not mean it that way. I was like, of course you meant it that way, because you just came across that. This is something that you're learning. So as a छोटे कई सारे examples हैं. Then second example was यहाँ पर in a school, ठीक है, in Canada, when this Article 370 happened, one girl was friends. So one Hindu girl was friends with a Sikh girl. ठीक है. The Sikh girl was talking about Kashmir and what's going on, and all the how Muslims are being targeted and this and that. So the girl just replied simply, 16-year-old girl said, hey, Hindus have been butchered, they have been genocided against, and the Kashmiri Pandits have been thrown out, things like that. What about those? So you know what that Sikh girl did? She basically broke friendship with the Hindu girl. She basically told the Hindu girl that I'm not going to be friends with you anymore because you are a Modi supporter, you're a fascist, just for saying that Hindus are being genocided against. Okay. And then the third example was, there was a group called Students Against Hindutva Ideology. It was started as a group called Holi Against Hindutva. So on campus, they decided to take अपना जो Holi festival है ना, त्योहार, they decided to take that, and they started to say कि on Holi, we are going to wear black clothes, and we are going to protest the Indian government's decision to have CAA. And they did this in 20 universities or something like that. Okay? But not only they decided to use Holi, which is a sacred Hindu festival, to malign it, they also used this idea, the false idea that says Holi is an oppressive festival where women are molested and semen is thrown at them. Okay? I mean, I'm not kidding you. This is actually on their website. No. I know the women who started this bakwas campaign in Delhi. Yeah. It came from these Maoists. Yeah. They did it. That semen balloons were thrown. It was found to be a total lie. Yes. But they've obviously paid to enact this drama because it's needed by others. It's a narrative. To attack. Yeah. Yes, you need that narrative. So these are the things. That's why we started CoHNA. We said, enough is enough. We need to start organizing people on the ground to challenge this. So uske baad, we started to successfully fight back on the ground. For example, there were a lot of anti-India policies, they're being looked at from the CAA perspective. So one big fight that happened was in Chicago, where a lot of Indian and थोड़ा Hindu हिंदी ज़्यादा बोलो, थोड़ा ज़्यादा बीच में. हाँ, तो इसमें क्या है कि CAA का जिसकी जो पॉलिसी थी इंडिया में,
उसकी उसके लिए अमेरिका में वो लोग एंटी इंडिया पॉलिसीज पास कर रहे थे, ठीक है। सो जैसे कि वाशिंगटन डीसी में, कैलिफोर्निया में, अलग अलग जगह पे, यहाँ पर शिकागो में एक फाइट हुई थी, मिनेसोटा में, अलग अलग जगह पे वो लोग एंटी सीएए पॉलिसीज पास कर रहे थे, सिटी काउंसिल्स में या फिर मेयर की ऑफिस में या फिर स्टेट लेवल पर। सो हम लोग कोना और अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में मिलके वो चैलेंज किया कि भाई ओके, ऐसी पॉलिसीज यहाँ पास नहीं करनी है, क्योंकि भारत और यूएस में फ्रेंडशिप्स अच्छी है, हमारी कम्युनिटी अच्छी है, और ये जो सीए है इज मेंट टू बी, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे कि जो परसिक्यूटेड हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स जो भी है, उनके उनकी रक्षा के लिए ये पॉलिसी पास की थी। सो यहाँ पर हम लोग ने शिकागो में इकट्ठे करके वो जो बिल था उसको हरा दिया। पर कैलिफोर्निया में या फिर मिनेसोटा में जहां पर बिल्स थे, वो हम लोग हरा नहीं सके, क्योंकि उन जो ऑपोजिशन था उसकी जो जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी हमारे हमारे से। पर क्या होता है, कभी कभी हम लोग हारते हैं, कभी कभी हम लोग जीतते हैं। सो अभी चालू हुआ है, 2 साल पहले कोरोना चालू हुआ, अभी धीरे धीरे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर जो लेवल्स में। पर ऑल्सो पार्टनरशिप्स, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक 500,000 जो भी है, उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेशन करके ये सब पॉलिसीज हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई दिस पॉलिसी इज हिंदूफोबिया, यहाँ पर जो हिंदूफोबिया का जो एटमोसफियर है उसको चैलेंज कर रहे हैं हम लोग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो आप तो राजीव मल्होत्रा के साथ काम कर चुके हो, he constantly talks about reversing the gaze, interrogating them on their record. Why are we not producing enough intellectuals who will hold a mirror to Bible, to Christian history, to all that? उनसे बात उनके बारे में करो, क्योंकि रेशियलिस्ट, ऐसे जो रेसिस्ट इतिहास इनका रहा है और आज भी है, अपना जवाब देने की बजाय नहीं नहीं हम कास्टिस्ट नहीं है, ये हमको इक्वालिटी सिखाएंगे क्या, जिन्होंने दुनिया भर में जेनोसाइड्स किए हैं। और कास्ट हमारा कंस्ट्रक्ट है नहीं, हम अपने को डिफेंड करने की बजाय, देखिए अब जैसे इस्लाम कभी अपने को डिफेंड नहीं करते, दे गो ऑन दी ऑफेंसिव, व्हिच इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल। क्रिश्चियंस डू द सेम। मुझे लगता है कि हम बहुत ही डिफेंसिव हैं। हमारे धर्म को कोई गाली देता, हम कहते नहीं 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 नहीं, तुम पढ़ तो लो ना, तुम पढ़ तो लो ना मनुस्मृति, उसमें ये नहीं। उनके पास क्या जवाब है? सर तन से जुदा, ये जवाब है। क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास क्या जवाब है? यू विल बी डेसिमेटेड फ्रॉम एकेडेमिया, फ्रॉम ऑल की पोजिशंस, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एंट्री कहीं नहीं मिलेगी, they can destroy your career. That's how the Christian West behaves. Islam, very simple. उनको कोई यूनिवर्सिटी उनके पास तो है नहीं जहाँ कोई जाना चाहता है तो सरतन से जुदा। अब हमारे पास क्या जवाब है इन दोनों का? इट कैनॉट बी नहीं नहीं हम इतने खराब नहीं हैं, आप नहीं समझते, हमारी कास्ट सिस्टम हमारी वो थी नहीं, हम तो फलां ढिमका थे, हम तो ये hell with it, they're not interested. ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं, they're not interested in the facts. Otherwise यूनिवर्सिटीज में क्यों ऐसे प्रोफेसर रखे जो उनको झूठ परोसते हैं, फरेब परोसते हैं? That clearly shows that that's knowing the facts, truth is not their agenda. To my mind, the moves have to be offensive. नहीं, आपकी बात 100% ठीक है, ऑफेंसिव होने चाहिए, और धीरे धीरे हो भी रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल राजीव जी की आपने बात कही, सो ही इज़ क्रिएटिंग, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम भी चालू किया है, इनिशिएटिव भी चालू किया है, जहाँ पर नए स्कॉलर्स को आगे बढ़ाना है जो अपने हिंदू पर्सपेक्टिव से आगे चैलेंज करेंगे लोगों को। जैसे कि आपने कहा कि भाई हमारे, आप कहते हो कि हमारे में कैस्ट है, पर आप लोगों में क्या है? आप नहीं, में तो ज्यादा है। हमने वो कहना एग्जैक्टली। नहीं हमारे में कास्ट है, भूल। नहीं है। आई एम सेइंग don't let's I'm thinking aloud, Nikunj. हाँ हाँ हाँ। I'm not ordering a particular line of action. I'm saying, ab, do you think an Islamist ever
bothers to say, आप कहते हो कि हमारे पैगंबर की शादी फला फला उम्र में हुई थी, पर आप, they don't do नहीं, that. एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली सीधा कहते हैं सर तन से जुदा, सच है तब भी. That's what shuts the whole world up. Now, the point I'm trying to make is, कास्ट का नैरेटिव उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया. इतने तो डफर है नहीं कि उनको पता ना हो. उनको पता ना हो कि फर्क क्या है जाति में और वर्ण में. और हिंदुस्तान एक्चुअली जब जाति व्यवस्था के अंदर था तो दुनिया की सबसे उत्कृष्ट पावर थी. वी वर द वेल्दिएस्ट नेशन, द मोस्ट ग्लोरियस नॉलेज ट्रेडिशन, द होल वर्ल्ड केम टू अस टू लर्न. वो जाति व्यवस्था में आपने तोड़ी. और वी नो वेरी वेल इनको जाति व्यवस्था से क्यों तकलीफ है, क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो सकती. अगर जाति व्यवस्था बनी रहती, अगर आपका ब्राह्मण समाज इकट्ठा रहता है, ब्राह्मण या मैं जिस भी समाज से हूँ, तो कन्वर्जन नहीं हो सकती थी ना. तो इसलिए उन्होंने अटैक इसलिए नहीं करना क्योंकि उनको इक्वालिटी चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए. दैट्स नॉट देयर एजेंडा. नहीं. Decimation, genocide is their agenda. Why do we reply to them? I'm saying just constantly start talking about Christianity and its history. Give lessons to, if our children know the history of Christianity and its doctrine, फिर वो मकौले पुत्र नहीं बनेंगे. हम क्या कर रहे हैं अपने स्कूल्स में भी, अगर मान लीजिए हिंदू ग्रुप्स अमेरिका में थोड़ी बहुत अपने धर्म की जानकारी दे दी, वीकेंड्स पे ले गए, कैंप्स में ले गए, थोड़ा गीता का पाठ पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बातें हैं वो. आई एम नॉट सेइंग वो मत करो, वो हमारे अंदरूनी नरिशमेंट के लिए. अब हमें जो उनसे लड़ाई लड़नी है, उनको गीता सुनाने से कुछ नहीं होगा, उनको योगा के गुण बताने से कुछ नहीं होगा. वो उन्होंने ले लिया योगा, अपना बना लिया, एरोबिक बना लिया योगा के, टेढ़े मेढ़े करके, कोई हॉट योगा, कोई कोल्ड योगा, कोई सेक्सी योगा, मतलब यू नो व्हाट आई मीन. योगा का भी बंदर बना दिया उन्होंने. Now, I don't think that's the level at which we can actually win any battle. It has to be that we hold a mirror to them, which is so horrid. But what children should hold that mirror, should know what that mirror is. Islam की हिस्ट्री क्या है, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री क्या है, डॉक्ट्रिन्स क्या हैं. और महाभारत रामायण तो पढ़ो ही पढ़ो, बहुत, बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके डॉक्ट्रिन समझो, इनका इतिहास समझो. वो नहीं बच्चों को समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इनसे सतर्क होके या इनसे मजबूत होके बातचीत कर सकेंगे. दैट्स व्हाट द कंक्लूजन आई एम कमिंग टू. नहीं, वो तो है ही. आई एग्री. जैसे कि राजीव ने कहा रिवर्सिंग द गेज. सो हमें उनकी रिलीजन्स और उनके डॉक्ट्रिन्स को भी पढ़ना है कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वो लोग क्या कहते हैं. बिकॉज इफ यू लुक एट सम ऑफ द, यहाँ पर मेरे पास एक अटलांटा में एक चर्च है, उसकी एक बुकलेट मेरे पास है. उसमें उन्होंने हिंदुइज्म को सिखाया है कि भाई दिस इज हिंदुइज्म. सो इफ यू लुक एट द डॉक्ट्रिन, इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें इज वेरी क्लियर, Hinduism has castes, Hinduism has poor people, and we should pray for them. ठीक है, ऐसी एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है. सो दैट इज गिवन टू ऑल द सेमिनरी टीचर्स एंड सेमिनरी स्टूडेंट्स. सो ऐसी डॉक्ट्रिन वो लोग बनाते हैं. तो वी कैन शोकेस द फैक्ट कि देखो क्रिश्चियनिटी या फिर कोई भी रिलीजन है, उसमें भी ये लोगों ने देखो क्या किया. इनकी हिस्ट्री देखो, 2000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें क्या किया हुआ है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. जैसे कि यहाँ पर नेटिव अमेरिकन जो है, यहाँ पर जो नेटिव अमेरिकन को जो किया था फॉर द पास्ट 100 years और मोर, उनकी हालत क्या है, ब्लैक्स की हालत क्या है. सो वी हैव टू शोकेस दैट. डेफिनेटली आई एग्री विद यू. You see, the other thing is that यहाँ मुझे लगता है कि ये जो मिशनरी प्रोपेगेंडा स्कूल से शुरू कर देते हैं हिंदुइज्म, मे बी I don't know, I'm just thinking aloud as I'm listening to you. There's not something that I had thought of before. Maybe a combined effort to say, please stop studying us. We find our children abused in class. We don't want you to. Let
people who want to learn about Hinduism learn it other ways. School curriculum से हमको हटाई दो. हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे धर्म के बारे में कुछ भी जानो, क्योंकि आपकी माइंडसेट में वो फिट ही नहीं बैठता. आप अपनी क्रिश्चियनिटी पढ़ाओ, अपना इस्लाम पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, हमको बख्श दो. वी डोंट वांट टू बी part of the school curriculum. Supposing you were, you see, opting out of a system, that in itself makes a statement. Because जो पहले कोर्स curriculum की लड़ाई लड़ी थी, तो फिर ये पैरा में ये बदलाव होना चाहिए, वो आई नो how much effort was spent by हमारे NRI भाई बहन वहाँ जो रहते हैं, brothers and sisters there. But it made no difference. Things have actually gotten worse. Because we went piecemeal, you know, ये छोटा मोटा, either that we be allowed to write about, or you leave us alone. We don't wish to be studied. Leave us alone. If that is the nara, if that is the slogan, if that's the war cry, we don't trust you, and therefore we wish to be left alone. So there are 2 points. The one you said, wish to be left alone, हमें अकेला छोड़ दो. Unfortunately, because the way यहाँ की जो system जो है वो नहीं हो सकता. No matter what you say, आप जो भी कहो, you can go, ये नारा लगा सकते हो, धारणा कर सकते हो, जो भी करना है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का यहाँ की जो policies और जो rules and regulations है उसमें वो होता ही है. Now regulations जो है उसमें we have to क्या कहते हैं उसको, उसमें मिलना पड़ेगा. This is why हमारा जो एक हिंदू पेरेंट्स नेटवर्क करके एक we have a division within CoHNA, हिंदू पेरेंट्स नेटवर्क. बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि स्कूल सिस्टम में पेरेंट्स जो है ना, उनकी वॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो पेरेंट्स को जाके कहना है कि भाई देखो, आपने ये करिकुलम लगाया हुआ है, दिस इज कंप्लीटली हिंदूफोबिक, एंड we will basically be against this curriculum until you change it. ऐसे करके हम इसके करिकुलम से खिलाफ रहेंगे जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक. अभी प्रॉब्लम क्या होता है मधु जी, कि हमको कहते हैं ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे. अभी हम लोग एक स्कूल है, जैसे कि कैलिफोर्निया में एक स्कूल है. तो कैलिफोर्निया की स्कूल ने कहा कि नहीं ठीक है, चलो यहाँ पर हमें अच्छी हिंदुइज्म को अच्छी तरह से दिखाना है. प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने बनाए नहीं है रिसोर्सेज, बनाए रिसोर्सेज ही नहीं है. क्योंकि अगर स्कूल कहेगी कि हमें आप करिकुलम दे दो, ठीक है, आप हिंदू लोग करिकुलम दे दो, हमें आपको इंडिया अच्छी तरह से पढ़ाना है, हिंदुइज्म अच्छी तरह से पढ़ाना है, हमें करिकुलम दे दो. होता क्या है कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है. How can you say that? I'm telling you, ऐसी बात है. नहीं, but what does it take to create a school curriculum? I tell you, if I were given the job in 2 years, मैं पूरा curriculum आपको 1 साल में बना दूं. What does it take? Nothing. I understand. I mean, to make this statement, then, well, we don't deserve any better. अगर इतने साल अमेरिका में रह के इतनी वेल्थ accumulate करके, you the crème de la crème, और इतनी हैसियत नहीं बनी कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए curriculum बना पाए, फिर लानत है, फिर तो ठीक है भुगतो. I mean, I'm shocked by this statement. Yeah, honest. and I'm telling you, I've been here for 29 years. मैंने कहा 29 साल से मैं यहाँ पर हूँ. सिर्फ एक ही ऐसा करिकुलम बनाया हुआ है, जैसे हिंदुइज्म टुडे जो है ना, हिमालयन एकेडमी, उन्होंने सिर्फ एक ही ऐसी वो भी अमेरिकन रन करते हैं. हाँ, नहीं वो तो ठीक है. It's not run by Indians. Exactly. So that's a different point. Americans रन कर रहे हैं, Americans हिंदुइज्म को ओरिएंट कर रहे हैं, अमेरिकन्स साधु बन के, भगवा पहन के हमारे बच्चों के लिए क्यूरिकुलम बना रहे हैं. हमारे पास ऐसा हो कैसे सकता है? All you know, it doesn't cost much. It doesn't cost much to, कोई खर्चा तो है नहीं. कंप्यूटर पे बैठना, इतना ज्ञान है, एग्जिस्टिंग किताबें लेंगे और मालूम है क्या क्या खराब है और क्या जानना चाहिए. ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और रॉकेट साइंस में तो हिंदुस्तानी बड़े आगे निकल गए. रॉकेट साइंस में आगे, सोशल साइंस में आगे. करिकुलम बनाने के लिए नहीं आगे बढ़ सकते.
That's the problem. I mean, no wonder. Yeah, this is not their problem. This is our problem. हमारी issue है ये, हमारा ही दोष है. Why can't CoHNA do it? We are working on it. इसमें standards चाहिए. So what we have to do, solution क्या होता है, मधु जी, कि you have to basically look at the standards. कोई भी state में कोई भी जो उसका standard होता है, if you go to the state website, यहाँ की जो state की website होती है, उसमें standards लिखे हुए होते हैं. उनको पकड़ के करना है. ओके, न्यू जर्सी फॉर एग्जांपल है, न्यू जर्सी में कोई स्टैंडर्ड्स हैं. सो वहां पर यू हैव टू बेसिकली सिट डाउन एंड से कोई टीचर को हायर करो या कोई किसी को हायर करो, एंड देन यू गेट अ हिंदू एक्सपर्ट एंड यू क्रिएट द करिकुलम. कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कर नहीं कर सकते. वी हैव द कम्युनिटी हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. प्रॉब्लम क्या होता है कि वो रिसोर्सेज हमें नहीं मिलते हैं. किसी को हम कैसे, ओके ठीक है, रिसोर्स चाहिए. मैं कह रही हूँ, मुझे कोई 2 रुपए भी ना दे, मुझे कोई 2 रुपए भी ना दे, और मुझे अगर कह दे कि आपको ये टेक्स्ट बुक्स चाहिए, आप बताइए कितनी देर में, बिना किसी से 10 रुपए लिए भी कर सकती हूँ. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ जीनियस, आई एम नॉट. आई एम अ वेरी वेरी एवरेज इंटेलिजेंस पर्सन. आई एम नॉट इवन द बेस्ट स्कॉलर ऑन हिंदू धर्म. मैं कुछ भी नहीं है, परंतु थोड़ी सी मेहनत करके क्या बच्चों को इसेंशियल पता होना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है? इज नॉट. अभी एक आप कहोगे कि भाई ठीक है, लेट्स यू नो, अभी फॉर एग्जांपल दिस ओपन चैलेंज. किसी को भी प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ, अमेरिका के में रह के जो अमेरिका ने दुनिया भर में ये माइंडसेट दे दिया है, यू फर्स्ट छोटा सा भी काम करना है, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, बजट बनाओ. बजट तो मल्टी मिलियन से काम चलता ही नहीं है उसके बगैर. तो फिर अपने टाइम का, आई विल चार्ज सो मच पर आवर, ये जो माइंडसेट से हिंदू भी काम करने लग गए हैं. हमारे यहाँ धर्म का काम कभी भी पैसे के हिसाब से, यू नेवर पुट मॉनेटरी वैल्यू ऑन योर धर्म का काम, बिकॉज इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ गिविंग. अगर इसको प्रोजेक्ट वो जिस तरह अमेरिका बनाते हैं, या ये जो सारा माइंडसेट है, और फिर बड़ा सा बजट है, व्हाट मनी डू यू नीड? आई से you actually don't. All you need is half a dozen smart people who know their dharma, who know history. उनकी तो कमी नहीं है. Half a dozen, they divide up. You don't even need $100 because you don't need to travel. You don't need to organize meetings. Everything can be done online. मुश्किल क्या है? मेरे तो समझ से बाहर है. If you were to say within the next 1 year, इतनी किताबें तो हमने बनानी है कोर्स करिकुलम की. किताब बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसको ट्वीक करते रहेंगे. किताब भी बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बुकलेट बनाने की जरूरत है. दैट्स इट, जो स्टैंडर्ड्स को अडहियर करती है, और कुछ नहीं है. इट्स नॉट, रिमेंबर हिंदुइज्म कोई, दे डोंट टीच यू 200 पेजेस, 200 पेजेस के या फिर 100 पेजेस के वो लोग नहीं सिखाते. सिर्फ 20 पेजेस की होती है, 20 या 30 पेजेस की पूरी वो कोर्स होती है उसकी, अबाउट इंडिया. सो यहाँ पर थोड़े ऐसे, देखिए, आपको हर लेवल के देने पड़ेंगे ना. फर्स्ट इज ये हम बेसलाइन दे रहे हैं, फिर वो कहेंगे ये आपको कहाँ से मिला. You have to have a backup literature which can also be used in the colleges. It can be part of university curriculum. क्या पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को? Not Wendy Doniger, not all these hateful creatures. The point that I'm trying to make is the material is widely available. And without spending $100, if people were willing to give their time, that's all. It can be done. So resources, और जिस दिन आपने ये कर दिखाया कि हमें पता है कि हम बच्चों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर है कि people will take you seriously. Who will take you seriously अगर आपको ही नहीं पता है? फिर क्यों लेंगे seriously? I'm sorry, this is ending up in a very different, it's taken a very different turn from what I wish that, this was a source. ये एक source है. See, ये source से चालू होता है सब कुछ. Because we are not giving the right information. हम लोग ही, हमारी community right information देती नहीं है. क्योंकि यहाँ पर Americans जो हैं, many of them are well meaning. उनका भी जो स्वभाव है कि भाई ओके ठीक है, हम लोग भी सबको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, पर वो लोग जब हमारे पास आते हैं, हमारी कम्युनिटी के पास आते हैं, कहते हैं भाई
ओके ठीक है, आप कहो क्या सिखाना है, तो हम लोग कहते ऐसे बैठ जाते हैं, हमको पता नहीं कि क्या सिखाना है। फिर हम लोग कहेंगे भाई ये सिखाओ वो सिखाओ ये सिखाओ वो सिखाओ, सो 50 चीजें नहीं सिखा सकते हैं। सो दे हैव टू बी, वो जो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उस पर हम लोग को अडियर करना पड़ता है। सो वी हैव टू लर्न दिस गेम, ये जो गेम है ना हमें सीखनी है, और वी हैव अभी इनफ तक एक्सपीरियंस, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग कर नहीं रहे हैं। अगर अमेरिका में बैठ के इतना पैसा कमा के सब कुछ करके, अभी देखो उनका एक ट्विटर का हेड बनता है साउथ एशिया का, एक कश्मीरी मुस्लिम, और वो ट्विटर पे ऐसे छा जाता है एक किस्म के लोगों को प्रमोट करने में और दूसरों को शैडो बैन करने में और तंग करने में। उनका वन मैन, हमारे गूगल में भी हैं, फेसबुक में भी हैं, फ्ला में भी हैं, ढिमका में भी हैं, कहीं कोई प्रयास नहीं करता कि मैं अपनी पोजीशन यूज करूं अपने धर्म और देश के लिए। और उसका बुनियादी कारण है कि मेरा धर्म है क्या किसी को भी पता ही नहीं रहा। वी आर सो गुडी गुडी, we always respect others. You see, we'll start by saying we don't hate anyone. It's Yeah. not that we are against you, it's not that we want to say any bad things about you, it's not that we want to be revengeful. हम शुरू ही इससे करेंगे हम बड़े गुडी गुडी हैं। So Apologies. don't, please don't fear us. The fact of the matter is people hate those they exploit most. Hindus have the longest history of brutal exploitation and no retaliatory measures. बहुतों ने लड़े, राणा प्रताप थे, गुरु गोविंद सिंह थे, शिवाजी थे, और फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत लोग थे, बट ओवरऑल द सोसाइटी अब 47 के बाद भी अंग्रेजों की सारी विरासत को चाट के यहीं बिठा लिया। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये तो एलिमेंट्री काम है, और काम क्या है? मधु जी, दिस इज आवर चैलेंज, यही तो प्रॉब्लम है हमारा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत सारी चीजें नहीं, सॉल्व पर हो सकती हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, डोंट यू नो 3 or 4 people who are willing to give time Yeah, without getting $2 million project? no, it's not a $2 million project. वही कह रहा हूँ, so this is why we started. So this is one of the things that we are working on. It will take some time, over the next, call it in 2023, we will have some information. This is why we started the Hindu Parents Network. These are the reasons why you have to build, set up करना पड़ता है. On the ground, you have to set this up first and then go in. You have to follow the rules and regulations. यहाँ के जो जैसे कि Muslim organizations हैं या फिर Sikh organizations हैं या even Jewish organizations, they have learned the game. We haven't learned. हमने ये सीखा नहीं अभी. So हम लोग सीख रहे हैं. This is why we started. This is the whole reason, because our community is very wealthy, very resourceful. But हमने रॉकेट साइंस सीखा है पर सोशल साइंस नहीं सीखा. ये प्रॉब्लम है. सब लोगों को रॉकेट साइंस सीखना है, सब लोगों को इंजीनियरिंग सीखना है, पर किसी को सोशल साइंस में बॉदर नहीं करना. अभी राजीव मल्होत्रा ने भी सोशल साइंस नहीं, फिजिक्स के थे. Why is it that after all he's raised huge amounts of money, he also is producing book after book, which is these are very valuable exposés. Why couldn't, for example, somebody set up a foundation for preparing curriculum? Yeah. Rajiv could have done it, but राजीव से इतने लोगों की भिड़ंतु होनी शुरू हो गई बेवजह से. Unfortunately, that also caused it. But otherwise, he's a very good anchor person for a lot of things. But somehow personality clashes or whatever. But he's constantly producing and very valuable stuff. Quality, yeah. Absolutely. And one man army essentially, but people do follow him, and he has developed some kind of a team. So what do you do? All right,
So what does CoHNA do? I'm sorry I got down at what you are not able to do. Let's hear what you do. And नहीं, no I'm not going problem. to interrupt you. नहीं, कोई बात नहीं. So, we over the last few years, we have had some very good, positive developments. We have worked with 15 to 20 different high schools यहाँ पर to challenge them on these curriculum issues. And we have provided good material. It's not organized yet, but हम लोग काम कर रहे हैं इस पे. Number one. Number two is के 2020 में यहाँ पर स्वस्तिका का बहुत बड़ा इश्यू हुआ है, अभी भी चल रहा है, कि न्यूयॉर्क स्टेट में दे वर गोइंग टू डिक्लेयर स्वस्तिका एज अ सिंबल ऑफ हेट इन स्कूल्स. ठीक है ना. सो हमारी संस्था है या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सबने मिलके चैलेंज किया कि भाई नो, स्वस्तिका इज नॉट अ सिंबल ऑफ हेट, इट्स अ सिंबल ऑफ गुड विल एंड वेल बीइंग. हिटलर ने जो इस्तेमाल किया था वो तो हाकिन क्रोइट्स था, ये स्वस्तिका नहीं था. सो ये कैंपेन चल रहा है, अभी कैलिफोर्निया में फाइट चल रही है. सो ये सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी है. फिर कैस्ट में जो चल रहा है उसमें भी हमने मटेरियल्स प्रोड्यूस की है टू टीच पीपल द राइट पर्सपेक्टिव, ऐसे करके. फिर ये जो पॉलिसी जो सीएए है या कश्मीर की जो पॉलिसीज है इंडिया की, टू मेक श्योर कि यहाँ के लोग जो हैं उनको पता चले कि भाई ये पॉलिसीज कोई एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ प्रो पॉलिसी फॉर पीपल हु हैव बीन जेनोसाइडेड अगेंस्ट. सो ये सब चीज़ें चल रही है. दीज आर सम ऑफ द कैंपेन्स वी आर रनिंग. एंड फाइनली ये हिंदू पैंट्स नेटवर्क का जो मैंने कहा, टू मेक श्योर कि हमारे लोग जो है ना, सी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग सिविक एंगेजमेंट नहीं करते हैं. मीनिंग हम लोग लोकल पॉलिटिक्स या फिर लोकल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होते. जैसे कि यहाँ पर एक पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, पर हमारे हिंदू लोग इन्वॉल्व नहीं है. और जो हिंदू लोग इन्वॉल्व है वो सिर्फ एकदम सेक्युलर, ओ एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, ऐसे करके इन्वॉल्व होते हैं. सो ये चेंज करना है. सो हिंदू पेरेंट्स नेटवर्क इज वर्किंग ऑन दैट, एनकरेजिंग पीपल टू रन फॉर ऑफिस. यहाँ पर जो सिटी काउंसिल्स होती हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन होती है उसमें पेरेंट्स होने चाहिए. जब आपकी जो आवाज होगी उसमें, तो ही लोग सुनेंगे. अगर आप नहीं हो तो कोई नहीं बोलेगा कुछ. वी आर नॉट, इफ यू, यहाँ पर एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट ऑन द एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू. सो हमारी सिचुएशन यही है, पर हम लोग वो बदल रहे हैं कि अभी पेरेंट्स से वो टेबल पर बैठ के कहते हैं भाई हम लोग को ये भी करना है. जैसे कि न्यू जर्सी में हमारे पास 3 टाउन्स है यहाँ पर सेंट्रल जर्सी में, जहाँ पर हमारे लोग बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बैठ के कहते हैं भाई लुक, हिंदुइज्म इज बीइंग टॉट इन द रॉन्ग वे. So now we have been challenging that, and they're saying, okay, we will work with you to change that. So अभी ये भी चल रहा है. And finally, youth empowerment, जो कहते हैं ना, at the end of the day, colleges में और high schools में youth को कैसे inspire करना है, so वो भी हम लोग कर रहे हैं. हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल के साथ पार्टनरशिप करके या फिर हमारा खुद का जो इनिशिएटिव है उसमें भी बैठ के हम लोग वी आर पार्टनरिंग विथ स्टूडेंट्स. बिकॉज अल्टीमेटली जो वो लोग जो है वो हाई स्कूल में होंगे, वो लोग कॉलेज में होंगे. अगर वो लोग वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और वो लोग कहेंगे कि ये प्रोफेसर मुझे ये सिखा रहा है वो गलत है, तब यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि भाई नो, ओके, स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग, नाउ वी हैव टू टेक एक्शन. हम लोग बाहर से कहेंगे, नथिंग विल हैपन. Fair enough. Fair enough. Now, my last question to you is, how have the Islamic groups managed to take charge and control of their minds and hearts and institutions? ये कैसे उन्होंने कर लिया? क्योंकि इस्लाम का वैसे तो चेहरा ही डरा देता है. उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनका सारा ग्लोबल जो माहौल है इस्लाम का, it can frighten anybody. How have they managed to present themselves worth defending by the entire American establishment? पीछे लग गए इनके सपोर्ट में. See, the Islamists who are involved, the Islamist organizations who are involved, they have done a great job for the past 30, 40 years. Institutions set up karne, like on college campuses, outside, and money. The funding of university departments. For example, Rutgers University has received, I think, $5 million from some foreign governments, let's say. Okay? Approximately 5. Harvard has received similar big numbers. Jo bhi hai, point is that there is funding that is coming in. Jab funding aati hai, you control the narrative. The third thing is constant engagement with the communities. यहाँ पर जैसे I'll give you example. जैसे कि 9/11 हुआ जब अमेरिका में. So एक community है सिख community. उन्होंने क्या किया?
हर एक टाउन हॉल है, हर एक सिटी काउंसिल मीटिंग है, जहां पर भी है वहां पर जाके खड़े हो गए और दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स टू शो के वी आर सिख्स, वी हैव अ टर्बन ऑन, वी आर दिस एंड दैट. दैट्स हाउ दे चेंज. 30 साल हो गए ना. फर्स्ट अटैक 1990 में जो था, उसके बाद 2001 में जो हुआ उसको 21 साल हो गए. Continuously they have been engaging and they have established that kind of rapport यहाँ पर. If you look at, so that's how you control the narrative and that's how you influence it, not control but influence also. So the Islamist groups have done a great job uh, creating this idea that every time you criticize something related to their community is Islamophobic. Doesn't matter what it is. So when there is something, let's say for example Pakistan में कुछ हो रहा है, for example let's say some extremists are killing minority Hindu girls and things like that. Again, if you bring that here, Kashmir में जो हो रहा है, if you bring that here, you will be considered Islamophobic because they have created an environment that is conducive to this narrative. So there are certain Islamist groups that are working really hard. यहाँ पर बहुत overtime काम कर रहे हैं वो लोग to make sure that the narrative is only one-sided, unfortunately. Nikunj, I think the big difference, and I think it's time कि हम हिंदू ये समझें बुनियादी फर्क, हमारा डीएनए क्यों फर्क हो जाता है. इस्लाम का बच्चा बच्चा इस विजन से इंस्पायर्ड है, उनको ग्लोबल डोमिनेशन करनी है. वो आज कल परसों तरसों की नहीं सोचते, वो पैदाइशी से उनको कि उनको पूरी दुनिया फतेह करनी है, पूरी दुनिया को इस्लाम के अंदर लाना है. तो उनकी 500,000 साल की तैयारी है. they therefore never get upset by minor defeats or setbacks. हम आपसे या मुझसे या किसी से भी पूछें, हिंदुओं से, आपका विजन क्या है, क्या क्या चाहते हो. एट मोस्ट जो हमारे हिंदू भाई हैं वो कहेंगे भी हमें प्लीज हमें अटैक करना बंद कर देना, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हमें क्यों नफरत करते हैं. एंड one of my American friends, not one, more than one, told me that the most salient characteristic of Hindus when people come to their India, अधिकतर लोगों से जो विदेशी आते हैं ना, हिंदू फैमिली कोई मिलेगी, घर बुलाएगी, तो एक ही सवाल सभी बोलेंगे, डू यू लाइक इंडिया, डू यू लाइक इंडियन फूड, do you like Hindus, you like Hinduism, you like your desire to be liked, because we've been so spat upon. हाँ, अप्रूवल, हमारे प्रधानमंत्री को भी यही एडिक्शन है कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उन्हें लाइक करें. नॉट अच्छा डराते हैं तो अपने कॉलीग्स को अपनी पार्टी में डराइए ना, जहां जिनको डराने की जरूरत है नहीं करते, because he also wants to be liked. We all are desperate to be liked, so we are always cautious. We want to say goody things. The point that I'm trying to make is this: किसी जमाने में ग्लोबल डोमिनेशन तो छोड़ो, क्रिश्चियनिटी में भी वो है ग्लोबल डोमिनेशन. जीसस के लिए सारी दुनिया को गुलाम बनाना है. हमारे पास वो लार्ज एम, लार्ज विजन, लार्ज गोल नहीं है. किसी जमाने में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अखंड भारत की बात करते थे. अभी किसी के मुंह से अखंड भारत भी नहीं सुनने को आता कि अखंड भारत अफगानिस्तान ईरान से शुरू होके फार ईस्ट तक जाता था. फार ईस्ट ना से कम से कम उधर से लेके बर्मा और ये तिब्बत, ये सब भारत का हिस्सा थे ना. ये भी हमारी हिम्मत नहीं है कहने की कि उस we want to work towards that. If we gave that vision to our children, the vision of Akhanda Bharat, what that represented, what that civilization meant, why that Akhanda Bharat is actually a good thing for the whole world, not in the way that Islam says it is good for the whole world, because वो genocidal है, but in the way that there wasn't this kind of hatred
इन द प्री क्रिश्चियन प्री इस्लामिक वर्ल्ड। ऐसा नहीं था, इस तरह का जेनोसाइडल वायलेंस नहीं होती थी। और जो कोर वैल्यूज़ हैं, चाहे इकोलॉजी है, वेस्टर्न एनवायरमेंटलिस्ट, कहाँ से जो हमारे वेदों में पृथ्वी के प्रति, प्रकृति के प्रति आस्था, वर्शिपफुल एटीट्यूड की बात, ये उसका टुच्चा पुच्चा सा वर्जन लेके एनवायरमेंटलिज्म शुरू करते हैं। तो the point that I'm trying to make is that unless people are fired with a larger goal and a larger vision of their future, not their individual future, but their collective future, तब तक नहीं ये बदलेगा, तब तक नहीं ये बदलेगा। और इसीलिए मैं सोचती हूँ, मैं 5 साल पहले तक भी मेरे मुंह से ये शायद वोकैबुलरी नहीं निकलती, पर हिंदू राष्ट्र की ओर जाना, ये सेक्युलरिज्म को कूड़े की टोकरी में फेंकना। अभी वीएचपी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया और रैली की और संकल्प दिवस मनाया, उसमें भी क्या कह रहे हैं, संकल्प वेरी वेल मीनिंग, आई रिस्पेक्ट देम फॉर इट, बट ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, शरिया से नहीं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही तो शरिया ने कंट्रोल कर लिया सारा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो उनको फ्रीडम देती है कि सारे देश को सबवर्ट कर लो, सारे देश को, सारी हिंदू सिविलाइजेशन को नष्ट कर लो। दैट इज हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू बी इंटरप्रेटेड। हमारे मुंह से अगर हिंदू राष्ट्र निकल जाए तो हम फासिस्ट हो गए। वो गजवा हिंद है तो वो एजेंडा बिल्कुल वाजिब है। The point that I'm trying to make is that when you're talking of mobilizing a community, it has to be around that large vision and goal. And I'm doing, as I said, these are things just coming from my mouth on the spot, on the spur. My idea was actually to interview you. And today, what I'm doing is I'm sharing your anguish at our collective plight and trying to do some loud thinking कि ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते। गूगल के हेड, फेसबुक में बड़े बड़े जो सीईओ हैं, बिकॉज दे हैव नो विजन फॉर हिंदू सिविलाइजेशन अदर देन देयर ओन कोरियोग्राफ। बाकी क्रिश्चियंस की भी है, इस्लामिस्ट की भी है, कॉमीज की भी है वर्ल्ड डोमिनेशन। तभी तो कहीं भी जाते हैं अंधेर मचाते हैं। Yeah, every civilization, every जो भी community है, they have their collective vision. थोड़ा ऊंचा बोलो। Every civilization and community has their collective vision. जो भी है, whatever the collective vision is, and we are lacking that collective vision. So आपने कहा, what is your vision? So I'll share what my vision is. My vision, and I'm speaking only for North America, especially here, यहाँ पर रह के, my vision is I don't need to be liked by anybody. मुझे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पसंद करो, ये है। I want equal footing and equal seating at the table of negotiations about world culture and religions. अगर आप कहेंगे कि मेरा धर्म है वो सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, ओके, मेरा भी धर्म, हिंदू धर्म भी सबसे अच्छा है, because every civilization has the right to have an equal footing. Now, if you decide that you don't like the fact that I am a Hindu, that's your problem, not my problem. But I will demand an equal seat at the table. If it's a problem that you have, that is your problem, not my problem. And I will make sure that we demand that across the board and organize the community to say that we want to demand an equal right to be a civilization and go back to our glories that we had and realize that today. So when we are working together, जैसे पूरी community काम कर रही है एक साथ, having this collective vision is critical. Demanding mutual respect. हमेशा we have respected. कैसे बात कर रहे हैं निकुंज? I really don't know. Please study Islam and Christianity. No, I understand that. I'm sorry. You have to. वही जो मैंने एनालॉजी दी थी कि बकरी और भेड़िए, बकरी कहते मुझे इक्वल राइट चाहिए। I'm sorry, भेड़िए के स्वभाव में इक्वालिटी की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भेड़िए के स्वभाव में, उसके डीएनए में बकरी को खाना। अब बकरी म्याऊं 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 मैं कर रही है,
कि मुझे इक्वल राइट चाहिए एंड आई विल डिमांड इट। वो हंसते हैं इसीलिए हमारे पे। Please No, no, understand, I I agree with you. don't want equality with people whose entire worldview, whose entire um, uh, religious training has no place for equality. मैं क्यों उनसे equality मांगू? क्यों? I don't want equality. My aim, I honestly, if somebody asks me, and again I'm thinking on the spur of the moment, I do not wish to live under the shadow of genocidal religions. I want to I want a safe territory for my culture, for my civilization. मुझे नहीं रहना genocidal cults के साए में। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, whatever that means, क्योंकि वहाँ इक्वालिटी की कोई परिभाषा नहीं। उनका हजारों साल का इतिहास केवल जेनोसाइड का है। उन्होंने ना कभी दी है ना कभी देंगे, और आज भी वो देने को उनकी वोकैबुलरी नौटंकी उन्होंने सीख ली है इक्वल इक्वल करने की। इस्लामिस्ट यूज दिस इक्वालिटी मॉन्गरिंग वेरी वेल। हिंदूज कांट, बिकॉज इस्लाम में इक्वालिटी आप उनको दे दीजिए, राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पर वो सर तन से जुदा का हक थोड़े छोड़ेंगे। उनके असली राइट्स तो सर तन से जुदा से आते हैं। तो आप किससे इक्वालिटी मांग रहे हैं? कैन दे डिसोन कुरान फॉर यू? नो। कैन दे डिसोन देयर हदीस फॉर यू? नो। सो हु आर यू आस्किंग इक्वालिटी फ्रॉम? आई मीन, आप सोचिए। तो मैंने कहा ना, बकरी भेड़िए से इक्वालिटी मांग रही है। Isn't it laughable? I'm really saying that we really need to think this through. We need to think this through. Let's not play this. We fall in a trap. They're spitting on us and say, मैं तो इक्वालिटी मांग के रहूंगा। वो दो झपड़ मारते हैं, मैं तो इक्वालिटी मांग के रहूंगा। वो किक करते हैं, मैं तो इक्वालिटी मांग के रहूं। ये उनकी भाषा में वो जवाब देते हैं। और आप उस ट्रैप में, उस इक्वालिटी के चक्कर में हमने उनको दे दी। हमने जेनोसाइडल कल्ट्स को इक्वालिटी से ज्यादा दे दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। वो हमें जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। अब don't we need to revise our goalposts and our vision of our future if we want to survive? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबाड़ में फेंकना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसी ने हमारे गले का पत्थर बन के उनको मोर देन इक्वल राइट्स दे दिए। और वो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हमें जलील करने के लिए, हमारी इंस्टीट्यूशंस को साबोटाज और सबवर्ट करने के लिए। they've taken over just as they've done it in America. So I don't understand why we want to be so modest in our demands, Nikunj ji. This is too modest a demand. As I said, बकरी भेड़िए से कहती मुझे प्लीज इक्वालिटी दे दो, या मैं तो लेके रहूंगी इक्वालिटी। वो चीड़ चीड़ पार के खा जाएगा तब तक, जब तक हमारी आवाज कोई सुनेगा। I honestly, I mean, it's taken a totally different turn, but I honestly think that Hindus have to seriously rethink their positions in the Committee of Nations, within this global one world that is emerging and which is targeting us collectively. मुझे लगता है कि ये इतने मॉडेस्ट गोल से जीना, थिंक बिग इन द वे दैट पैगंबर जी थॉट। बताइए, रेगिस्तान के एक हैमलेट में या जहाँ भी छोटे से शहर में वर्ल्ड डोमिनेशन की उसने एक बड़ी इमेजिनेशन की और करवा लिया। और हम पैगंबर जी से इक्वालिटी मांगेंगे? नेगो देखो ना, प्लीज हमारे शिव जी के लिए इक्वालिटी मान लो। आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छे हैं, आप उनकी इज्जत करो, हम आपकी इज्जत करेंगे। ये भाषा में बात कर सकते हैं? उनका ध्येय साफ है, आपके हर मंदिर को तोड़ना। हम कह सकते हैं उनसे? वो नहीं उस एजेंडा को छोड़ रहे। निकुंज, कुछ भी कर लो, हमारे देश में नहीं छोड़ रहे, अमेरिका में नहीं छोड़ रहे, जहां भी है नहीं छोड़ रहे। फिर थोड़ा तो रीथिंक करना ही पड़ेगा ना।
Anyway, let me have you conclude and let's see if there are any questions or comments. मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई सुपर चैट में है. कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं देखती रही हूँ, but I cannot at random take any comments. So I will let you conclude if there are no, if there's no super chat. एक तपन कह रहे हैं, मधु जी you start conducting workshops to train. तपन तपन जी, बात तो आप सही कह रहे हो, but I don't think I am this has to be thought through on a much larger scale. You're telling me that we organize workshops to train intellectual warriors, etc. But I think before we become intellectual warriors, Tapanji, it's very important that we think it through. हमारा collective goal क्या है? और मेरे लिए कम से कम this conversation has made it very clear, Nikunj. Somehow, you have really cleared many cobwebs from my head. Minimal agenda, Hindu Rashtra, and next step, अखंड भारत. इससे कम अगर हम सोचेंगे, then let's be prepared to be extinct. वो भी कोई बुरी बात नहीं है. जब कोई कौम कायर हो जाती है तो ठीक है, वाइप आउट हो जाए, कोई बात नहीं. I would rather be extinct than accept the domination of these genocidal cults over my land. आप वाइंड अप करिए जो भी आप कहना चाहते हैं. नहीं, I understand the frustration and the concerns, no doubt about it. उसमें होता क्या है कि louder. in the United States, there's a different dynamic. आपने जो चीजें कही, many of them are connected to India, and there's a lot of power that the Indian government, but also collectively the civilization that is born from Bharat has. So that needs to be, आपने जो कहे points, that needs to be thought of at the Indian level. वहाँ पर locally communities need to think about all these topics. In North America, यहाँ पर जो dynamics है वो थोड़े अलग हैं, because यहाँ पर we are minority, और उसमें how to navigate, यहाँ के जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ की जो rules and regulations है, उसमें navigate करना कैसे हो सकता है, कैसे संभव है. That is something that we are first challenged with. वहाँ से चालू करना है और फिर you can think big. हम लोग तो छोटा भी नहीं सोचते. अगर आप यहाँ पर आओगे, you will see कि छोटी चीजें भी नहीं सोचते. Forget about the big things. पहले वहाँ पे चालू करना है. So that's what our first effort is, to start there. फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है. अगर पहले at the ground level हम लोग बेस भी नहीं कर सकते हैं, तो लानत है हम पे. निकुंज जी, आप फिर वहीं पे पहुंच गए. आप कह रहे हो हम माइनॉरिटी हैं, हमें यहाँ का इकोसिस्टम देखना है. इस्लाम भी तो वहाँ माइनॉरिटी में है ना. हिंदू कितने % है नॉर्थ अमेरिका में? Maybe 3% or something. हाँ, 3% maybe. और इस्लामिस्ट? That I'm not sure, maybe 5, 7. पर हमसे कम थे. 10-15 साल पहले तक हिंदू से कहीं कम थे मुस्लिम्स. नहीं, North actually, in America, you have to understand कि there are different types of Muslim groups. एक ही नहीं है. Yes. हाँ. It's not I just understand. Indian Muslims or Pakistani Muslims. यहाँ पर अफ्रीका अलग-अलग. के भी आ रहे हैं. हाँ, there are different types of Muslim groups. So चलिए 5 भी सही, 6 भी सही, कुछ भी है तो माइनॉरिटी ना. वो 2% होके भी वो पैन इस्लामिक गोल, उम्मा का गोल, वर्ल्ड डोमिनेशन का गोल छोड़ते ही नहीं है, तभी एक्सपैंड करते हैं. उनकी हर पॉलिसी, इंक्लूडिंग हाउ मेनी चिल्ड्रन टू हैव, इज गाइडेड बाय not by self-interest but this large interest of the global ummah Islam. वो वर्ल्ड डोमिनेशन के लिहाज से ही निकलते हैं और जहां भी हैं फिर फैलते रहते हैं. हम सिकुड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास, मैं नहीं कह रही हूं अमेरिका में आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को उस विजन से जोड़ना, वो सभ्यता क्या थी उससे जोड़ना, और उसको कैसे हमने रिकवर करना है,
वो गोल नहीं है, तो हमारा गोल बहुत ही, क्या बोलते हैं, पिटिफुल रह जाता है. प्लीज डोंट हेट अस. Please don't hate us. We don't hate you. Why do you hate us? That's about what NRIs are mostly doing, fighting a battle, defensive battle. Please don't hate us. Please don't teach such horrible things about us. We're not so bad. बट कोई लार्ज गोल है ही नहीं. अगर आप कह रहे हो इंडियन गवर्नमेंट से, अगर 1% तो क्या 0.5% भी जहां मुस्लिम होते हैं ना, वो उस लार्ज गोल से जुड़े रहते हैं. छोटे छोटे मिशनरी आए ना, ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान में, कैसे उस लार्ज गोल से जुड़ के आज देखिए कितने पूरे ग्लोब को किस तरह क्रिश्चियनिटी ने डोमिनेट कर दिया, बिकॉज दे हैव अ लार्ज गोल. इफ यू डोंट हैव अ लार्ज विजन टू काउंटर इट, नॉट नेसेसरली कि हमने सारे दुनिया में हिंदू राष्ट्र दुनिया बनानी है, बट एटलीस्ट जो हमारा था उसको रिकवर करना है. वो था क्या, इसकी पहचान करनी है ना. उसकी पहचान है हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में. रॉकेट साइंस सीख लेते हैं, पर आत्मज्ञान तो क्या, अपने अपने पूर्वजों का ज्ञान भी नहीं है. तो मुझे लगता है कि लार्ज गोल की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन मिलती है. नहीं तो प्लीज डोंट हेट मी इज नॉट ए सफिशिएंटली inspirational agenda, because then people tend to fall in line with all the rules of conduct that are demanded of you, and that is dhimmitude. Live like a dhimmi. Be modest. Don't ever be offensive. Be likable. वो करते करते फिर कुछ रहते ही नहीं है. ऐसा मेरा मानना है. But I know that the battles you're fighting are serious, but so are they here. We are here also. You know, दिल्ली में रह रही हूँ तो I feel like I'm living in the belly of the monster. चारों तरफ से घेरे हुए हमें ये जेनोसाइडल ताकतें. तो चलिए, we must continue this dialogue. I hope it's not for just one time, and the conversation turned into something very different from what I had initially planned for. So forgive me if I ended up telling you what you should be doing there. जहाँ हम यहाँ क्या कौन से बहुत तीर मार रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं. आप वहाँ कोशिश कर रहे हैं छोटी मोटी, हम यहाँ छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं. So we must join hands together under all circumstances, and you can count on our support anytime. Manushi is there for you. So इन्हीं शब्दों के साथ आज हम conclude करते हैं. Friends, please do like, share, and subscribe to this channel. Dhanyavad for staying with us for 1.5 hours. And Nikunji, all the very best to you. Thank you, Madhuji. It's a pleasure. Namaskar.